Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 25th of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial for the day. The coverage of the news will include the Hindu and Indian Express, which is again relevant for both civil services examination, state public service commission examination, and many other one-day examination conducted by various agencies of the state and union. So this analysis, the discussion will help all the aspirant appearing for different segment of the examination. First, I'll give you the highlights of the news, then we'll proceed further with the detailed analysis of the news one by one. So starting with the highlight, the first news is about the sickle cell breakthrough. UK government has given the approval for the CRISPR-Cas9 therapy, which is again something very important. I'll give you the detail of that as well. Second important news talks about India and EU that have actually signed the semiconductor pact. यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने पैक्ट साइन की है सेमीकंडक्टर को लेकर के. The third important news talks about the generic drug which will be made indigenous in India for the rare diseases that is it. So this will call for more affordability for the citizen of this country. The second last news talks about the CERT, which is included in the list of exemptions from the Right to Information Act. And we'll conclude the session with editorial that talks about how the climate smart agriculture is a need of the hour and it has many significant benefits when it comes to the sustainable agriculture. We'll see the detail to this and dive down into some of the relevant points. Now let's get started with a detailed analysis of the news one by one. So the first news of the day is the world first CRISPR, that is called Cas9 gene editing therapy. This was recently approved by UK. UK के regulators ने इसे approval दी है. This is something which will be a breakthrough. And CRISPR की अगर बात करें, this stand for clustered regulatory interspaced short phendomic repeats, right? It's a big full form. You have to remember. Sometimes there can be a questions in this as well, right? तो Cas9 जो जीन थेरेपी है उसके लिए अप्रूवल दी गई है specifically for the two disease that is concerning the globe. The one is the sickle cell disease and the other is the transfusion dependent B thalassemia. ये दोनों genetic disorder है. Global level, if you look at the global level, these are the two concerned disease जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ भी रिपोर्ट की गए. स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया में सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड थैलेसेमिया पेशेंट्स इज ऑल्सो ऑन द सर्च. नाउ व्हाट इज दिस थेरेपी ऑल अबाउट? इस थेरेपी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? व्हाट आर द पार्ट दैट हैड बीन इंक्लूडेड? सो द थेरेपी इज एक्चुअली नोन एज कैसगेवी, विच इज aim to treat the blood conditions of sickle cell diseases and B thalassemia. ये दोनों blood disorder हैं. I'll show you images so that it give more clarity on that part. Now this is the first licensed therapy in the world based on the gene editing technology, जिसे CRISPR या Cas9 भी कहते हैं. And this for this particular therapy there was a Nobel Prize in 2020. Now you need to take this as a note because this can be relevant for the prelims examination as well. Sickle cell disease is known as the sickle cell anemia, which causes the deliberation pain, and even people with the thalassemias often require to have a regulations of the blood transfusion. Sickle cell anemia में जो normal cell होती है वो उसकी shape change हो जाती है like this shape, and in thalassemia there's a blood transfusion which is required at a regular interval, which create problem and it is cost. The part of the treatment is very costly in India. The genetic diseases has become the available options and it has revolutionized the part of biotechnology sector. Now, how does this therapy work? First, to understand how this works, then I'll show some images to give the clarity on that part. अगर बात करें सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया के जो भी एरर्स होंगी जीन में या फिर द पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन किसे कहते हैं? इट्स अ प्रोटीन दैट इज रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द टिश्यू. सो हेमोग्लोबिन बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में रीच आउट करते हैं. द थेरेपी यूजेस पेशेंट्स ओन ब्लड स्टेम which can precisely edit with the Cas9 technology. तो जो individual जो human being है, right? Suppose this is an individual, right? तो उसकी ही जीन को edit करके वापस जो corrections है वो की जाती है. I'll tell you how it is done.
Now, the gene therapy is also called BCL11A, which is a crucial for switching the fetal to adult hemoglobin in a targeted therapy. तो एक एरिया टारगेट की जाती है और accordingly उसे एडिट की जाती है. Now, how does it work? Now, this is more important for you to understand about the therapy. So this is the image, like see, this is the disrupted part of the gene, right? जहाँ पे Cas9 एक्चुअल में यूज होनी है और इसको एक्चुअली हाईलाइट करके जो थेरेपी है उसमें डिलीट की जाती है या एडिट की जा सकती है. यू कैन यूज द वर्ड एडिटिंग. सो दिस पार्ट इज रिमूव्ड एंड द करेक्टेड पार्ट इज इंसर्टेड इन अ वे. You can even read the text or content which is mentioned below for more further clarity. बट ये आपको इमेज से ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे ये एडिटिंग पार्ट वर्क करती है जीन थेरेपी में, विच इज ऑल्सो नॉन एज Cas9 जीन थेरेपी और CRISPR थेरेपी, राइट. नाउ सिकल सेल और थैलेसीमिया की बात करें, ये दो ऐसे डिजीज हैं जो कि ग्लोबल कंसर्न है. इंडिया में काफ़ी पेशेंट्स हैं इसके. इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. बोथ सिकल सेल where the red blood cell are actually assuming the crescent shape. इंडिया में स्पेसिफिकली 30,000 to 40,000 चिल्ड्रन ऐसे हैं. दीज आर द केसेस फॉर इंडिया वेयर दिस ऑर्डर हैज बीन रिपोर्टेड और काफ़ी नंबर्स इसके सर्च पे रहे. Thalassemia lead to the low hemoglobin, leading to the fatigue of an individual, shortening in the breath and irregular heartbeat. तो ये thalassemia के characters हैं. This is the character for the sickle cell anemia. People with the conditions need the blood transfusion. I'm talking about thalassemia. Thalassemia में जो blood transfusion है उसकी ज़रूरत पड़ती है throughout their life. It is not something that is cured for an year और आप बाद में ठीक हो जाएंगे. इसकी treatment lifelong है. It's a lifelong treatment. This is why it is considered as a disease which is burdened throughout your life. Now, India has the largest number of child with thalassemia in the measure of the world, which is about 1 to 1.5 lakh children are reported. Now, some images to give you the clarity on the part. How does the thalassemia and the sickle cell blood actually look like? तो सिकल सेल की बात करें, देख सकते हैं दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वेयर द ऑक्सीजनेटेड पार्ट इज देयर इन द ब्लड, और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो कि सिकल सेल आरबीसी है. आरबीसी स्टैंड फॉर द रेड ब्लड सेल. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू must be aware of this part. Now, the other thing that is there is about the normal cell which is there in the thalassemia. This is for the thalassemia, this is the normal cell, and these are the malformed red blood cell where the proper oxygenated part is not there. Blood cells में भी जो WBCs हैं वो भी कम होते हैं और platelets के नंबर भी accordingly कम होते जाते हैं. Now, the other news, that is India EU signed pact for semiconductor ties, something very important. India has been looking forward with augmenting the part of semiconductor, चाहे वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के थ्रू हो या दूसरे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशंस में हो. यहाँ पे जो कोलैबोरेशंस है वो यूरोपियन यूनियन के साथ की गई है. सो यूरोपियन यूनियन हैज एक्चुअली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड EU to manufacture the part of semiconductors. Now, क्या एम है? डेफिनेटली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू हैव अ कॉपरेशंस और जहाँ पे रिसर्च और इनोवेशंस, स्पेसिफिकली द R&D इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर्स विल बी इम्प्रूव्ड. मार्केट पार्टनरशिप भी बढ़ेगी. बोथ साइड विल आइडेंटिफाई कि किस तरह से कोलैबोरेशंस होनी चाहिए. जो सेमीकंडक्टर में टेक्नोलॉजीज हैं उसको कैसे और एडवांस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कटिंग. अगर कॉस्ट कटिंग की भी बात करें, कॉस्ट कटिंग होगी तभी यहाँ के लोगों को इसकी बेनिफिट्स मिलेगी इंडियनाइजेशन की. The MOU actually symbolizes the strong commitment of India and EU relations in terms of developing a robust semiconductor supply chain in the innovations. So definitely India और EU की जो ये collaborations है वो आने वाले समय में semiconductor sectors पे काफ़ी ज़्यादा help करेंगी, augmenting the overall capacity as well. And this is syncs with the India's plan to provide the incentives of worth 10 billion to the chief manufacturing industries in country. इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट में बूम है. यूएस इज द कंट्री विच हैज़ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. नाउ आप सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट में जो इनिशिएटिव्स ली हैं उसके बारे में कुछ देखते हैं. गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है. द सेमीकंडक्टर फॉर द स्कीम हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 1 trillion digital economy as a part of US trillion which is like 5 trillion. प्रोडक्शन टारगेट भी बढ़ाई गई हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी इसके साथ. और सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इंडिया हैव स्पेसिफिकली ISM विच स्टैंड फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू इम्प्लीमेंट द ब्रॉडर रोड मैप. और दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ग्रोथ है, अगर लुक्रेटिव मार्केट के तौर पे सेमीकंडक्टर्स को देखी जाती है,
कुछ इंपॉर्टेंट फर्म्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, इंटेल इज अमंग देम विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 15.6. इवन यू कैन यूज दिस इन मेंस पेपर, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी यूज कर पाएंगे. उसके बाद सैमसंग है, फिर एस के हाइनेक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, क्वालकॉम जो कि ज़्यादातर सेलफोन्स के लिए चिप्स बनाती हैं, ब्रॉडबैंड, टेक्सास इंस्टीट्यूट, मीडिया टेक्स विच इज देयर इन द एंड्रॉइड फोन्स, एंड दीज आर सम ऑफ द अदर मार्केट वैल्यू विच इज देयर. नाउ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग हुई है इसको लेकर के. दिस इज कॉल्ड टीटीसी मीटिंग विच हैज एक्चुअली हेल्प बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू कम अप टुगेदर. और ये मीटिंग वर्चुअल हुई थी जहाँ पे इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है फॉर द सेमीकंडक्टर्स. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द टीटीसी वाज एक्चुअली हेल्ड इन ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है. द रोल ऑफ TTC is to deepen the part of strategy engagement in terms of trade and technology for both partner countries, that is India and European Union. And this is the second time that US is with the European Union and they have attached with the TTC mechanism. Now, moving ahead with other news, that is indigenous generic drug for rare disease. इंडिया ने एक्चुअली एक एफर्ट लिया है जहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया दैट they are actually making four different drugs for different diseases to ensure a cost effectiveness of the medicine. और ये इंडिया में जो पेशेंट्स हैं रेयर डिजीज के उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. ना रेयर डिजीज के कुछ डिजीजेज हैं. आई टेल यू व्हाट आर द रेयर डिजीज for which the manufacturing of the generic drugs will take place, and this will be an important information for the examination perspective also. Now list of rare disease की अगर बात करें, जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली कहा है कि 4 ऐसे रेयर डिजीज हैं जिनके लिए यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स बनाए जाएंगे. ना दिस विल बी द जेनरिक ड्रग विच एक्चुअली विल बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया. सो दिस विल बी इंडिजिनस पार्ट विच विल बी डेवलप्ड. तो फर्स्ट है दैट इज टायरोसिनिया टाइप 1, एक रेयर ऑटोसोमल डिजीज है जो कि जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में काम करती है. नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू बिफोर आई प्रोसीड विद डिटेल्स, ये जितनी भी डिजीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी भी एक डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. फॉर एनी डिजीज देयर कैन बी ए क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, या फिर हर एक डिजीज और उसको किस चीज़ से रिलेशन है, किस टाइप से वो रिलेशन है उसके, इसके पेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सो मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दिस. Now the other disease as a Gaucher disease, that is for the fatty substances जो कि कुछ specific organ में accumulate होती है like spleen and liver, right? Now we have Wilson disease. ये again एक autosomal recessive disorders है जहाँ पे particularly involved in brain और liver और cornea में क्या होती है, जो copper की accumulations है, इस disease में copper की accumulations बढ़ जाती हैं. That is where this problem is known as Wilson diseases. And then we have Dravet-Langston-Gastaut syndrome. यहाँ पे सीवियर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे रिपीटेड सीजर ऑफ एपिलेप्सीज दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ. तो अर्ली स्टेजेस में ही एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. तो ये 4 ऐसे रेयर डिजीज हैं जिन पे गवर्नमेंट एक्चुअल में काम कर रही है. हर एक डिजीज में क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको पता होनी चाहिए. नाउ क्या रोड मैप है गवर्नमेंट के पास? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड विद मेक इन इंडिया ड्रग्स, एंड दिस विल बी द गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर इंडिया, बट इसकी जो एडवांटेज है वो ग्लोबल ऑर्डर्स पे भी होंगी. All drugs that will be treated will be imported with the prohibited the expenses that is there. अभी जितनी ये diseases है उसके लिए क्राउड फंडिंग की मेथडोलॉजी यूज होती थी बिकॉज दे हैव अ हाई कॉस्ट होती थी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल ड्रग्स मानी जाती थी जिनकी कॉस्ट को कम करने के लिए ये इंडिजिनस इंडिया में मैन्युफैक्चर्स की जाएंगी. वी हैव अ स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर दैट. वी हैव NPRD, दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस, जो कि कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. और 30 प्रायोरिटी दी गई है रेयर डिजीज पे जो कि डिफरेंट अलग डोमेन पे. स्पेसिफिकली एज ऑफ नाउ 4 डिजीज आइडेंटिफाई है. बाकी की जो डिजीज है अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल बी कमिंग विद द ब्रॉडर रोड मैप. Now the other news, that is center exempt CERT from the ambit of RTI, something again important. जब ये ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी न्यूज़ में रही है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है फॉर द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स टू IT. तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो CERT है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको RTI के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ RTI. Now, what is CERT-IN? This is a computer response team. They are actually the nodal agencies that responds to the computer security breaches of Government of India or any organization be it that is working under the Government of India. It's functional organization जो कि Ministry of Information and Electronic Technology के अंदर काम करती है. This is working since 2004. Sometimes the inception date become important for the examination.
ये एनालाइज करती है, डिसेमिनेट्स करती है इंफॉर्मेशंस को, और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के पॉलिसीज और मॉनिटरिंग करती है. दे आर actually providing the preventive and response mechanism for the security quality management services. So topmost agencies है government of India की, like जिस तरह से paramilitary forces में भी have NSG commandos for quick response, तो किसी भी तरह की अगर mal practices हो, security breaches हो, computer responses, virus breaches हो, उस पे CRTI in actual में respond करती है. Now, other agencies जिनको exemptions दी गई हैं apart from this, we have agencies like Intelligence Bureau. Intelligence Bureau के बाद we have RAW, that is Research and Analysis Wing. उसके बाद Directorate of Enforcement है, और National NTRO, जिसे NTRO भी कहते हैं, National Technical Research Organization. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आरटीआई के एम्बेट से बाहर हैं. क्यों बाहर है? बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न है. नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ें होंगी वो आरटीआई के थ्रू जानकारी नहीं दी जाएंगी, ऐसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है. Now the other organization which is there is the Defense Research Organization, जिसे DRDO भी कहते हैं. DRDO is a defense organization, और BRO Border Road Organization जो कि Ministry of Defense के अंदर काम करती है. This was a question which was actually asked in CAPF examination. तो आप इस तरह के सवाल साथ के साथ ही प्रैक्टिस करते चल सकते हैं. Now moving ahead with the editorial for the day that talks about the smart farming, specifically the climate smart agriculture की practices को कैसे बढ़ाने की ज़रूरत है, and this call for sustainability in the environment and agriculture sectors. Now, what are the things that I'll be looking into the deep part of the editorial? We'll see the climate smart agriculture first, और climate change में क्या क्या measures लेने की ज़रूरत है, community supports की कितनी अहमियत है, policies क्या है community supports efforts की, और conclusion के साथ इसे conclude करें. सो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, क्लाइमेट चेंज और फूड एंड सिक्योरिटी इज अ पारामाउंट चैलेंज फॉर 21st सेंचुरी. अगर आज के जनरेशन में बात करें, जिस तरह से पोल्यूशन की लेवल बढ़ी है, नाउ दिस हैज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंट इन पार्ट कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो कोप की मीटिंग हो, सेवरल मीटिंग लाइक कोप 27 और कोप 28 जो कि अपकमिंग है यूएई में, और यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाई गई है कोप 27 में. तो ये दर्शाती है, दिस इज एविडेंशियल ऑफ द फैक्ट that we definitely need to put hard drive in terms of getting things done, right? The repercussions of the climate change are actually having the heat waves, flood, drought और cyclone. ये सारी चीज़ें जो adverse conditions हैं, that is evidential fact कि climate change की वजह से क्या क्या problems हो रही है mankind को. Now, the southern continent are grappling with the severe droughts, the part of disruptions in agriculture productions and farmer well-being. Climate change एक बहुत बड़ी danger है आने वाले time में, and this need to be reevaluated with their practice. Climate smart agriculture क्या है? This is a holistic framework जहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको कंसर्न में लिया है, और इसकी एक ब्रॉडर रोड मैप बनाने की बात की. दे हैव एक्चुअली कम अप विद द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ पिलर्स बनाए गए हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के, जिन पे हमें काम करने की जरूरत है. कौन कौन सी ये पिलर्स हैं? द फर्स्ट पिलर इज द सस्टेनेबल increase agriculture productions income. Then we have adopt build resilient climate change. उसके अलावा जो GHC है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसकी emissions कम करना wherever possible. Dimension of the climate smart practices जैसे कि water smart, weather smart, energy smart और carbon smart practices को ज़्यादा से ज़्यादा include करना. And improving the productivity with land degradation and improve the soil health. Right? This is how the climate smart agriculture is actually working. Now we have climate smart and measures. किस तरह से हमें measures लेने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले futures में, I mean for the coming generation, for the sustainability, we need to ensure that जो agriculture productivity है, that need to be improved. Climate change में जो crop yield है, that can be again distorted. So we need to sort it out. जहाँ पे 2010 से लेके 2029 तक we need to keep it as high as 9%. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल जो SDG की गोल्स हैं, उस पर भी हमें काम करनी है. यू नीड टू चेक कौन कौन से ऐसे गोल हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड है. दिस इज अ टास्क दैट यू कैन डू ऑफ योर ओन. नाउ वी हैव नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विच इज देयर, राइट? तो गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी, और उसके एडाप्टेशन मेजर्स के लिए भी. द प्रोग्राम सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड is actually there in India, which help in the nutritional management and optimize the agriculture practices and methodology in the country. Now, community support efforts की अगर बात करें, so we have community support effort
जो कि एक feasible solutions है with in terms of the climate resilient agricultures. ये minimize करती है वैसे efforts को जहाँ पे we are actually far footing on the part of increasing that, तो वहाँ पे reduce करने में जो community support efforts है काफ़ी हद तक मदद करेगी. It attempts to create agriculture system जहाँ पे resilient और environmentally friendly जो practices हैं उनको actually we can do it. Now, CSA also promote the crop diversifications, increase the efficiency, integrate the drought resilience crop part, and even disrupt the climate change. The increasing popularity of the CSE is promoting the indicators with the biodiversity conservations. नाउ कम्युनिटी सपोर्ट एफर्ट्स की पॉलिसी पर से अगर बात करें, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो कम्युनिटी सपोर्ट एफर्ट्स के थ्रू काम कर रही है? यस, वी हैव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और उसके अलावा परंपरागत कृषि योजना एंड द बायोटेक किसान और क्लाइमेट स्मार्ट विलेज. तो ये आप एग्जाम्पल पे CSA के एग्जाम्पल की अगर बात कीजिए तो गवर्नमेंट की ये कुछ आप इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजीज या फिर जो पॉलिसीज मेजर्स है उसे भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाएंगे. Now, to conclude the part, climate smart agriculture (CSA) is again an important measures जहाँ पे ये ensure करेगी food security को. This is the one. Then it empower the farmer and even protect the dedicated ecosystem. So sustainability की अगर बात करें, sustainable development की बात करें तो ये सारी चीजें मदद करेंगी. The farmer are taking the adaptations measure to reduce the negative effect of climate change. And additionally, ये ज़रूरी है that there is need for 60% increase in the agriculture productivity by 2050 to meet the growing food demand. जिस तरह से populations बढ़ रही है उसको meet करने के लिए we need to even grow more and more food items. और उसके लिए agriculture which is sustainable in part will definitely need to be required with the part of priority, and it is imperative to do so in a अगर society in large की अगर बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. Moving ahead with the answers discussion for the yesterday questions. जो पहला सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शन बी है. तंजानिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. स्टेटमेंट 2 is correct and statement 3 is correct, right? So you check out what you have marked as a correct option. Second questions में option 1 correct है. That is Tamil Nadu government has issued order to implement the project dolphin, and the main dolphin habitat is found in the Gulf of Mannar in the Biosphere Reserve. So this is the correct option. Moving ahead with the today's MCQ questions for the day. The first question is about the National Company Law Appellate Tribunal, जिसको NCLAT भी कहते हैं. It's in accordance with the Companies Act 2013. It appeals with the part of National Finance Reporting Authority. The President of India appoints its member. तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद आप अपने ऑप्शंस A, B, C और D के फॉर्मेट में हमें ज़रूर लिख करके बताएं. मेक श्योर पार्टिसिपेटिंग जिन बच्चों जो एस्पिरेंट इसमें अपने पार्टिसिपेशन दिखाएंगे उनके कमेंट्स का हाईलाइट स्क्रीनशॉट लेकर के मैं जरूर बताऊंगा नेक्स्ट एनालिसिस में. Now, consider the part with the SIM swap scam. Fraudsters will gain the part of OTP and even the bank agreement using the SIM swap scams. This is carry using the foster activity to demand daily communications with the victims. So इस तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रीलिम्स के लिए सिग्निफिकेंट है. यू कैन राउट क्वेश्चन नंबर 2. उसके बाद आप अपने ऑप्शंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पार्टिसिपेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इनएविटेबल so that it will give you more and more clarity on the current affairs questions. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, queries about test series, admissions, mock test, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video. Thank you for staying connected.